Okay. So we were on this point that there was a whole demonstrative study was conducted by Doko in 2009, his book edition. This was that the main factors that influence the uh, our eating habits are income. Very first of thing, that whatever you are buying, you're purchasing, definitely directly or indirectly is being influenced or get some interaction with your income. The prices, obviously your own belief, that whatever you believe, that you either are believing in good products, that what is your mindset, what are you seeing and getting influenced by. If you are getting good knowledge or good well, I'm not giving myself a good thing, but platforms like Dr. Shah's and this community, we are giving people some knowledge that we own by ourselves, have researched and thought that this is the right thing to be shared. So we must get attached to some of these kind of platforms so we can get the better knowledge, the right and the exact knowledge about things. Then we have local traditions. Our traditions have always been with us since we are small to now, that these traditions are coming, and whatever our grandparents were doing, our mothers have to take the traditions down. Like recently I got to know a thing that parents are giving wheat to their children in 6 months. That should not be done. uh, because when your children have starting weaning, when you have started giving your children some food items, you must start from something easy, digestible foods. Because if you are starting in the weaning era something very hard like wheat. Wheat is a whole grain. It has a lot of bran. It needs time for your children to get attached and get introduced with this thing. At least you have to wait till 8 months to introduce wheat to your children, because the baby's stomach is very small and very soft and very delicate. You must not start giving them at 6 months the wheat. You must start it from something that is soft, that is easily digestible by the children. uh, Parents give after 4 months the egg to the children in the water, in their milk bottle they add one egg and give it an egg yolk, and they're just giving it to the children. That is a very 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 wrong habit. At least a whole year has to be given to the children before introducing eggs. So these kind of points are very much important, and because of the traditions, the parents have the mothers are I guess nowadays the mothers are a little bit more concerned about these things than the traditional mothers, our grandparents. Still, in the houses where there are dadis and nanis are present, they are like, it's fine, give it the children, ये दे दो इसको, खैर है, हो जाएगा, हमने नहीं बच्चे पाले, and all these kind of setups. But I guess the mothers must study before introducing anything to their children's. The culture and the social environment is also, social and environmental and economic factors is also very uh, big responsibility in these all. Obviously we get influenced by our environment, the ecosystem we're living, whatever in our surroundings, everybody is doing, हम उसी भेड़ चाल पर चल जाते हैं कि भाई that person is doing this thing and the other person is doing that thing, that we must also get on this thing, और हम भी यही करते हैं. But I guess we must not do these kind of things. These things are influencing us, but we, अल्लाह मियाँ ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया, इतना बड़ा दिमाग दिया है हमें, उसको जो है वो इस्तेमाल करते हुए we must search, हमें ढूंढना चाहिए, we must learn, we must study, and then we have to do that thing. The last book and the last thing that I have here is that mother's education is one of the factors that affect the dietary habits of children.
The quality and type of diet the children consume predicts the mother's as well as father's educational level. The current study assesses and compares the dietary habits of rural and urban children areas. Like this was my research that I have done in the urban and rural areas, that the mothers and the fathers uh, education is the very important thing for us, that they must have all the knowledge and all the study before we are giving whenever the parents are coming to me for some diet plans of their children, I first make the parents aware of the stuff, that they must know everything first, because the diet plan that I'm giving for the children is a very general thing. We also have a diet plan prepared for this community that will be shared to you after. Uh, Dr. Shahbano will share with you all. But the first and the foremost thing here is, if any of you will have further thing about that, you can come to me at any time. At first of all, whenever we are giving someone some information and knowledge about something, we must know about their nutritional assessment and nutritionally whatever where they are standing. We have to do a whole extensive assessment. Nutritional assessment allows the healthcare provider to systematically assess the overall nutritional status of the patients and diagnose them, that either they are malnutrition or they are good healthy, because we have two different type of malnutritions. One of the malnutrition is in which the children, in which the identity is underly having a very less amount of underlying a lot of nutrients, but sometimes the malnutrition is also denoted as when you are getting excess of nutrients. Identify underlying pathologies that leads to malnutrition and plan necessary interventions to be taken measure force. We have to do these assessment things. First of all, we have made up a questionnaire. We do some question answering for with the parents, that what are they eating, what is their histories, if they have any problem, disease, illness in their family, either the parents having, the grandparents, about what their lifestyle is. Then we give them some kind of worksheets according to their needs, according to whatever they're asking and saying us for. Several activities are also present that we have to see that what we have to give to the parent. Then a clinical assessment will do, will see their nails, the hairs, their skin type, their eyes, under eyes, all these things. And then if we are not getting the right and accurate assessment, then we go for some biochemical tests. Okay, now coming back to our uh, dietary habits thing, the sooner you introduce wholesome nutritional choices into a child's diet, the easier they'll be able to develop a healthy relationship with food, and that can last them a lifetime. That I have just explained in the very start of my presentation, that one breakfast, if you are missing, then you are making a lifetime problem for the children, because the diseases, the infection, the illnesses does not come into your body in a night. No, not overnight you are getting it. You are getting diseases, illnesses, sicknesses day by day. One day's negligence can cost you a lot. So you have to be conscious for your child every day. Every breakfast is very important. Like this is a saying that eat your breakfast like a king, eat your lunch like a prince, and eat your dinner like a beggar. Like a beggar has a very few things to eat at night. So you also must eat very less in your dinner. And in Pakistan, the whole Pakistan is like opposite to this. They eat their dinner like a king. The dinner is the main meal for everybody. The very
easy example of this thing is, so we must introduce breakfast to our children and make it our very good, make it the foremost thing for ourselves. Then, and it can be simpler and less time consuming than you imagine. Yes, this is very easy for you and very comfortable. हम अपने ऊपर इस चीज को सिर्फ सवार करते हैं कि यार नाश्ता हो नहीं पाएगा, नाश्ता हो जाता है, and this is very healthy if you just start taking a very good and a healthy and a heavy breakfast for just a whole week. You just do this as a challenge to yourself कि आपने एक हफ्ता ये चैलेंज करना है अपने साथ कि नाश्ता बहुत अच्छा करना है आपने, and you will see that there are a lot of significant changes in yourself. If you are if you have any kind of problem, just do this challenge and you will see that you will have very significant changes to yourself. With these tips, you can instill healthy eating habits without turning meal times into a war zone and give your children the best opportunity to grow into healthy, well-balanced adults. Definitely, if they're having very good diets in this lifestyle, because they are in their developmental stage, they are getting everything, they are making their bodies are getting made, they're getting all the developments in their body, and if they are eating very good products in this age, in the next age they will be they won't be getting any problems उनको मतलब अब तो this is very common कि बहुत अच्छे अच्छे मतलब जवान जवान बच्चे होते हैं 17-18 कॉलेज गोइंग एंड दे आर लाइक हमारे घुटने दुख रहे हैं और हमसे चला नहीं जा रहा, भागा नहीं जा रहा. This is because of the very minimal physical activities and the sedentary life our children are having. Along with good dietary habits, the children must also be introduced to something physically activity, like to some sports. In the back days, even in my childhood, we have to play something in football, cricket, badminton. These were our games. Nowadays, children are having PUBG and all the e-games, and they're just using the phones, tablets, laptops. They're using these things. This is a very wrong thing as well. So these are some points that should be known to the parents, that we must switch our soda to water. We must not give our children sodas in their early ages. In later time, we also adults, teenagers, and further people must not also have to use sodas too much in their diet. But I do not restrict fully completely, because whenever you are restricting your children from doing something, they'll find some other way to do that. If you are like being strict with thing that no cross on this thing, not खानी नहीं है, लेनी ही नहीं है, देनी ही नहीं है, तो वो आपसे वो काम चोरी करेंगे. So you must give your children that thing your own self, but उनको समझाएं कि बेटे नहीं, ये ज्यादा नहीं लेनी, this is not good for you. So switch to water, just switch, not restrict. I can use that word, but I have just used the word switch, that it's better to use more of the water and other things than the soda. Then choose whole grains. This is the point that I love, that eating whole grains is very good whenever you are using the whole grains in your diet instead of the refined products. That is very good, because the bran will not make you hungry very early. You will get delayed appetite. You will have satiety feeling at a very early level. You will get full before the meal. You have as refined products add to your diet. Encourage movement. Definitely the encouragement of physical activity in your life is also very important. Move. If you cannot go outside your home, your house, you are obligated to stay in the house, you have a lot of things to do in your house, then stick to 15 minutes walk in your own room. There is some space in your room, and you have to move yourself.
The household work is not at all included in your activity. You must have to make some time specific for the this kind of thing. For your exercise, make 15 minutes specific, and no time in the whole day should be specified. Like if you are saying that, oh, yesterday I did the exercise at 7 p.m, now it's 8 p.m and I cannot do, my time has passed. It's fine. You can do exercise at any time, you can do movements at any time. Nowadays there are plenty, thousands of exercises that you can do while sitting, while standing, while even lying on the bed. Just make movements, do something. Don't stay idle, don't sit idle. Just make your body move. Make breakfast a must. I have explained this a lot before that breakfast is important. We must do breakfast, and breakfast should be a must. We can skip the whole day meal. Do skip your lunch, skip your dinner, skip your snacks, but do not skip your breakfast. Avoid processed foods. Processed foods, as per refined foods, too much refined and too much processed foods have just starch in it, and too much starch is very bad for you, because that starch is just making you obese. You are just getting fat because of the starch, and you're not getting healthy at any point. So just make whole grains your habits and include that in your diet. Use the whole grains. If you are not अगर आप अपना आटा खुद नहीं पिसवा सकते, there are plenty of multi-grains, whole grain products available, breads. आजकल तो रोटीज भी जो है वो भी पैक्ड आती हैं, बनी हुई आती हैं फ्रोजन प्रोडक्ट्स के अंदर, that are made of whole grains. You can use them as well. Do not bring junk food home. Try to eat junk very less, because the junk food is also too much processed food, too much bad oil they're using. Whatever they, they tell you in their advertisements that they use very good products, but that's junk. They have to make that tasty, flavorful, and they can use anything bad in that. I have also in my research of some food services, we have to do some side visits, the kitchen visits of some restaurants. In Faisalabad, I have done 18 to 19 restaurants kitchen visits. And the last thing that I had on my mind was, we must eat less junk food from outside, because the more we are getting and attracted towards the junk food, the more problems and more deficiencies our children and us are getting with these things. Encourage healthy eating habits to our children. Our children must eat more healthy. Then comes the counseling. Nutrition counseling is a two-way interaction between a patient and their provider. We do counseling not only by giving lectures to our community or our patient or whoever's coming towards us. We do a two-way interaction. If we are telling two things, we must have to get one from the other person. We have to do a talk, communicate. We have to communicate. Under the guidance of a registered dietitian, patients learn how to interpret the results of their nutritional assessment and how to incorporate a variety of well-balanced nutrients into healthy, economical, and flavorful meals and snacks. Patient can gain an understanding of the impact that nutrition has on their health status and modify their behavior to focus on practical lifestyle changes to reach nutritional goals. Patients benefit from establishing and maintaining personal goals and lead to a healthier lifestyle overall. We focus on whatever their practical lifestyle is, and we tell them that how to make it more better. And we try to modify their lifestyle, not to completely change it. Dietitians and nutritionists, we include some points. We gradually make the patient go the
this we do not add them on the roller coaster very sudden, that getting a lot of ups and then directly down. No, then gradual changes in the diet and the lifestyle can will not make you anyhow uncomfortable. So we must do it gradually. The nutritionist and everybody has to make gradual changes to their diets, and this is the one of the key point in this as well, that gradually we must modify it. The conclusion of this is that the causes of bad health or malnutrition, malnourishment are directly related to inadequate dietary intake and diseases, but indirectly related to many other factors, including child care and feeding, sanitation and hygiene. Sanitation and hygiene I have not discussed before, but in the conclusion I have added it because the hygiene must be kept in our side. That nowadays the products that are coming in the markets are very unhygienic, are very inorganic. uh, it's better that everybody must use kitchen gardening in their lifestyle a little bit. If you cannot grow a lot of products, a lot of vegetables, a lot of fruits at your home, try to use something, try to grow something at your home, because a little, as I have said, that gradual changes, gradually eating healthy, gradually eating organic can change your whole health a lot. Counseling should address these various factors to result in sustainable changes. We try to make awareness through a lot of ways and make sure that the children are getting full nutrition in adequate amount. Their development of body and brain should go perfectly. In this all presentation, this was my whole agenda, to make the children's body and brain both go perfectly. We have made some brochures of children's. We will share with you that. Dr. Shahbano will share that here or in the chat box, whatever is I've suitable. shared it in the group. मैंने group में add कर दिया. आपने जितना data send किया था ना सारा, मैंने questionnaire सब चीजें plan सब चीजें मैंने group में send कर दी हैं WhatsApp पे. If you want आप show करना तो आप इधर भी show, मतलब if you want to show it here, you can show it here as well. Okay, but I guess it's fine, because if they can ask me later if they have any kind of question, because all of those things were related to my whole presentation. ठीक होगा. I'll share your number as well in the group. अगर किसी ने आपसे कुछ भी पूछना हो या consultation Sure. करना हो, so you know. बिल्कुल बिल्कुल. This is a wind up from my side, and if anybody have any questions, I am open to them. Yeah, please, आपने मेरे से कोई questions पूछने हैं, so you could ask and then I'll start my part. किसी के ज़हन में कोई भी questions हो तो chat box में पूछ लें या वैसे. Any questions? सैयद नूर, कितना टाइम रह गया इस वाले मीटिंग का? हाँ. 14 minutes. So we have like, if I think everything's clear probably. So, एक second. I think everything's clear. So if कोई questions नहीं है, so we could move forward. End पे भी अगर आपके पास कोई questions हो, तो मैं is with us. Inshallah, she'll answer your questions. Thank you so much. मैं very informative and आपने इतना time निकाला. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. Thank you very much for giving such a good platform to me and for sharing all these insights. जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया. सही हो गया. Let's start then. Okay, so आज मैंने कुछ research की थी, which I wanted to share. Nutrition के बारे में हम चीजें कर रहे थे. So I was fascinated कि कुरान पाक के अंदर भी इतनी सारी आयात हैं जो पाकीज़ा खाने के बारे में.
हलाल खाना इज वन थिंग, लेकिन पाकीज़ा खाने के बारे में आई विल शेयर ऑल दोज डिटेल्स विद यू इन द ग्रुप एज वेल. सो दैट केम टू मी कि अभी हम जो आजकल खाना खा रहे हैं, हलाल भी चाहे हो, इसके अंदर भी डाउट है काफ़ी सारी चीज़ों का, लेकिन पाकीज़ा है कि नहीं. ठीक है, मैंने जिस तरह से बात की, गंदगी की बात की, वो सब चीज़ें बात की, आजकल क्यों हमारे बच्चे इतने बीमार हो रहे हैं. WHO की एक रिपोर्ट जिसके बाद आई वाज really, you know, it was a shock to me, which said, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, कि खुदा न खास्ता हमारे बच्चे जो 2000 के बाद पैदा हुए हैं, उनका लाइफ स्पैन अपने पेरेंट्स से कम होगा. एंड व्हाई इज दैट सो? दैट इज सो बिकॉज ऑफ द फ्री रेडिकल्स जो उनकी बॉडी के अंदर आए हुए हैं. इतने ज्यादा फ्री रेडिकल्स हैं, इतना गंद है, जिसकी वजह से उनके न्यूट्रिशन इस तरह का है कि वो शायद फिजिबल भी ना हो अपने प्रॉपर एक लाइफ स्पैन को पूरा करने के लिए. इफ यू गाइज नो, मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग कि एक पहले जो इंसान थे, उनके थाउजेंड्स ऑफ इयर्स ऑफ लाइफ थी. ठीक है, ग्रेजुअली अभी हमारा क्या मीन है, 60-70 मीन है. सो व्हाई इज दैट सो? 1000 से 60-70 पे आ गए. अभी आजकल स्पेशली 20s में लोग जो हैं वो फौत हो रहे हैं. सो कोई ना कोई रीजन होगी, जिसमें से न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा आंसर है. बीइंग अ होलिस्टिक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, लाइफस्टाइल मेडिसिन के 7 पिलर्स हैं. होलिस्टिक मेडिसिन के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम लोग जो प्रोडक्ट्स अपने लेके आ रहे हैं, इंशाल्लाह 2 महीने तक वो लॉन्च भी करेंगे, वो न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत ज्यादा हम फोकस कर रहे हैं. क्यों? बिकॉज दैट इज समथिंग जो जिसके अंदर मेन गंद एक तरह का पड़ा हुआ है. I'll just wanted to share an insight with you guys कि हम एक चॉकलेट स्प्रेड बनाने की कोशिश कर रहे थे. उसके लिए हमारे जहन में ये था कि ठीक है, पाकिस्तान में इतने सारा चॉकलेट की शॉप्स हैं, इतने सारे ककाओ बीन्स, ये वो सब चीजें मिलती हैं, तो हमें आराम से इधर से मिल जाएगा. लिटरली इट टुक अस सो लॉन्ग. हमें कराची में डिफरेंट चीजें पता लगी, डिफरेंट, हमने चॉकलेट एक्सपर्ट से बात वगैरह की. तो उन्होंने कहा कि आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर कहीं से भी प्योर ककाओ पाउडर, कोको पाउडर नहीं मिलेगा. क्यों? इसको आयोडाइज किया है, इसको पॉलिश किया गया है. चीनी तो फिर भी कहीं से हम लोग रिफाइंड नहीं भी हो, बगैर पॉलिश के वो सब चीजें ले सकते हैं, लेकिन ककाओ बीन्स क्योंकि बाहर से आते हैं, तो यहाँ पे उनके साथ ऐसी चीजें होती हैं कि वो एडिबल ही नहीं होते. और आप इमेजिन करें कि हम लोग अपने बच्चों को चॉकलेट के कितने प्रोडक्ट्स डेली बेसिस पे दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में अवेलेबल ही नहीं है. ठीक है, एंड दिस इज आई एम सेइंग, मतलब ये बहुत हमने रिसर्च किया इस पे, क्योंकि हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए चाहिए थे. फिर हमने यहाँ से लिया ही नहीं, हमने दुबई से मंगवाई ये चीजें, बिकॉज यहाँ पे इतनी इम्प्योरिटी थी. लेकिन आई जस्ट वांट टू हाईलाइट द थिंग कि हम डेली बेसिस पे चॉकलेट मिल्क अगर हम दे रहे हैं, या हम बच्चों को केक्स बना के दे रहे हैं, इवन घर पे भी दे रहे हैं, तो वो जो हमारे पास रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्या है? सो न्यूट्रिशन इज समथिंग जो एट दिस पॉइंट एक पैंडेमिक की शायद शक्ल ले लेगा. जैसे मैंने बताया कि हम लोग अपने बच्चों को न्यूट्रिएंट डेंस फूड नहीं दे रहे. क्वांटिटी अगर हम देखते हैं ना, क्वांटिटी ओवर क्वालिटी देखनी होती है. इसके अंदर एक पॉइंट रिलेटिविटी की मैं बात करना चाहूंगी, सोसाइटी के साथ रिलेटिविटी. इसमें यह है कि आपने सोसाइटी का नहीं देखना कि सोसाइटी को, ये मैंने पहले भी कई दफा ये बात हाईलाइट की है, वी आर सपोज टू लुक एट द पैरामीटर्स. वो मैं डिस्कस करती हूँ क्या है, ना कि सोसाइटी. रिलेटिवली अगर हम देखें, एक ब्रेस्ट फेड बच्चा है और एक बॉटल फेड बच्चा है. ठीक है, इमेजिन करें दो बच्चे आपके सामने. जो ब्रेस्ट फेड होगा ना, वो थिन होगा, लीन होगा. मैंने ये बहुत सारे केसेस देखे हैं. उसको शायद डायरिया भी थोड़ा दूसरे बच्चे से के निस्बत ज्यादा रहेगा. लेकिन जो बॉटल फेड होगा वो गोलू सा, चबी सा होगा, तो देखने वाले कहेंगे कितना हेल्दी है. आई होप आप लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की होगी कि जो बॉटल फेड बच्चे होते हैं बड़े क्यूट होते हैं, कितना हेल्दी है, ये है वो है, वेट भी अच्छा है. लेकिन अगर हम उनकी हीमोडायनेमिक्स देखें, उनके बॉडी के पैरामीटर्स देखें बायोकेमिकली, तो जो बॉटल फेड बच्चा है उसके अंदर इतने फ्री रेडिकल्स हैं. सबसे पहला प्रोसेस्ड फूड ही वो सबसे पहले, जैसे मैंने वीट की एक बात की, लेकिन आप ये देखो बॉटल फेड बच्चे को आप उसके छोटे से मैदे को कौन से केमिकल्स दे रहे हो? दे आर पॉइंट्स जब कोई और चारा नहीं होता, लेकिन
चाहे वो बच्चा चबी है, हेल्दी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो थिन लीन बच्चा है उसके अंदर क्या है। तो आपने अपने बच्चे को कभी सोसाइटी के पैरामीटर से नहीं मेजर करना। पैरामीटर जिससे आपने मेजर करना है वो दो हैं, ठीक है। एक पैरामीटर है एक्टिविटी, आपका बच्चा एक्टिव है, चिड़चिड़ा नहीं है, ठीक है, हंसता बोलता ठीक है, भागता दौड़ता ठीक है, चाहे सुक्का सा है, लेकिन एक्टिविटी अगर उसकी ठीक है ना, आपका बच्चा ठीक है। दूसरी चीज सिकनेस, इम्यूनिटी को ये डिनोट करती है। आपका बच्चा बार बार अगर बीमार होता जा रहा है, ठीक है, चाहे उसका वेट वगैरह सब चीज ठीक है, लेकिन हर वक्त उसको नजला जुकाम खांसी, हर वक्त उसको पेट का मसला, हर वक्त कुछ ना कुछ हो रहा है, तो बच्चे को मसला है। लेकिन अगर बच्चा थोड़ा लीन थिन भी है लेकिन सिक नहीं है, एक्टिविटी ठीक है, तो ये आपके दो मेन पैरामीटर्स हैं जिनको आपने देख के चलना है कि मेरा आपको फुफ्फियों तायों दादी नानी को सही लग रहा है नहीं लग रहा, आपका बच्चा ठीक है। दो पैरामीटर्स क्लियर। चैट बॉक्स में इफ यहाँ तक मेरी बात आप लोगों को समझ आई पैरामीटर्स की, एक्टिविटी एंड sickness, please type in the chat box if it's clear so that I can move on. Yeah, clear. Thank you, Parida. सो बेसिकली हमने ये दोनों, आपने ये इन दोनों चीजों को देखना है और किसी चीज को आपने नहीं देखना, एक्टिविटी एंड सिकनेस। बाद में हाँ कुछ बच्चों का बहुत मैल न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी काफी सारी चीजें हो जाती हैं, वो जारी बात है, फिर आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, मुझसे कंसल्ट करें, वो आपकी मर्जी है। लेकिन या 6 minutes रिमेनिंग, 1 minute रह जाएगा तो नूर बताना, देन आई विल स्विच ऑन टू द लास्ट पार्ट, लास्ट मीटिंग पार्ट। ठीक हो गया, ये चीज हो गया। दूसरी चीज ये है एक प्री ब्रेकफास्ट की बात, जो लोग मेरे क्लाइंट्स हैं जिनके साथ अभी हम प्लान कर भी रहे हैं, और वैसे भी मैंने ग्रुप्स में भी ये चीजें डिस्कस की है प्री ब्रेकफास्ट की। दिस इज समथिंग जिसकी अराउंड 17 years की रिसर्च है इसमें। डॉक्टर शगुफ्ता फिरोज का स्वाइप प्रोग्राम है, शी इज हार्वर्ड स्कॉलर। तो वहां पे भी उन्होंने चीजें की, बिकॉज ये जो होलिस्टिक मेडिसिन और ये सब जो चीजें हैं, इसका रुझान इस वक्त इस पॉइंट में पाकिस्तान में इतना नहीं है जितना बाहर रिसर्च इस पे हो रही है। हार्वर्ड में एक्सटेंसिव रिसर्चेज हैं, उसमें ये है कि जो फर्स्ट मील ऑफ द डे, जैसे मैंने भी बताया ब्रेकफास्ट की इंपॉर्टेंस बताई, वो क्यों है। बेसिकली हमें सिर्फ ये चीज पता होना कि ये चीज इम्पोर्टेंट है इज नॉट इनफ। आजकल वी आर, मतलब हम इंटेलेक्चुअल लोग हैं माशाल्लाह से, सब पढ़े लिखे हैं, तो हम लोगों को चीजों की डेप्थ में भी जाना चाहिए। ब्रेकफास्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। why should we have breakfast, why should it be the most important meal of the day। तो उसको अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें ना, तो इसका लिंक बनता है कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल और हार्मोनल रश के साथ। जब हम सुबह उठते हैं तो एक तरह की हमारी मशीनरी स्टार्ट होती है, ठीक है, हमारा लिवर, हमारी मेटाबॉलिज्म, वो सब चीजें चल तो रही होती हैं रात को भी, लेकिन जब हमने उठना है, हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट होनी है, हार्ट ने पंप ज्यादा करना है, बाकी सब चीजें होनी है, तो एक कॉर्टिसोल, एक हार्मोनल रश भी होता है। उसको कैटर करने के लिए अगर हम अपनी बॉडी को कोई खाना अर्ली मॉर्निंग आवर्स में दे दें, तो उससे हमारी बॉडी की रेगुलेशन बहुत अच्छी होती है। और ब्रेकफास्ट से भी पहले अगर हम एक और एक्स्ट्रा स्टेप जाना चाहें अपनी हेल्थ के लिए, तो एक प्री ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट है। प्री ब्रेकफास्ट के अंदर जो बिगिनर्स हैं, नट्स, कोई से भी नट्स ले लो, वैसे हम लोग प्रॉपर बॉडी टाइप के हिसाब से नट्स देते हैं, लेकिन आप कोई भी, पीनट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, किशमिश और चने बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने बेड साइड पे रखो, अपने बच्चे के बेड साइड पे भी रखो। बच्चों को आदत नहीं होती, लेकिन अगर हम आहिस्ता आहिस्ता ये प्री ब्रेकफास्ट की आदत उनमें डेवलप करें ना, तो उनकी हेल्थ वेल बीइंग के ऊपर इसका बहुत असर होता है। स्पेशली जिस चीज पे इसका बहुत असर होता है ना, वो हमारा सर्केडियन रिदम होता है। अगर आप YouTube पे भी सर्च करेंगे, मेरे पास अगर कोई वीडियो हुई YouTube की, मैं आपके साथ शेयर करूंगी सर्केडियन रिदम के बारे में। सर्केडियन रिदम ये होता है कि हमारी बॉडी की क्लॉक्स होती हैं, अंदरूनी ना, दिमाग में क्लॉक है, हर ऑर्गन की क्लॉक है। उस क्लॉक को हमने सिंक्रोनाइज करना है हमारी डे एंड नाइट की क्लॉक के साथ। अनफॉर्चुनेटली हमारा लाइफस्टाइल इस तरह से है, आलमंड इज फाइन। अच्छा, आलमंड के ऊपर भी एक रिसर्च थी। मैंने ना हम लोग जो अपनी प्रैक्टिस में करते हैं आलमंड्स नहीं देते,
कहते हैं आलमंड्स को जैसे सोक करके बादाम भिगो के दें, लेकिन रिसर्च के अंदर पीनट्स का ज्यादा फायदा है। लाइक हमारे बचपन में हमें याद है कि माएँ आलमंड्स ही रहती थी, लेकिन अभी जो स्वाइप प्रोग्राम के हिसाब से अगर मैं बिकॉज आई एम टेलिंग यू साइंटिफिक रिसर्च बेस्ड चीजें, आलमंड्स हम लोग लेते हैं एज अ ट्रेडिशन, तो हम लोगों ने भी लिए हुए हैं, पर रिसर्च के हिसाब से चने किशमिश एंड पीनट्स इज अ बेटर ऑप्शन आलमंड्स की कंपैरिजन में। और डॉक्टर शुगुफ्ता ज्यादातर ही पीनट्स ही सजेस्ट करती हैं, आई मैं खुद भी काफी अरसे से पीनट्स ही लूं, उससे रेगुलेशन अच्छी होती है। फिग्स भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, खजूर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, कुछ लोगों को वॉलनट्स भी करते हैं। आप मिक्स करो, मतलब एक चीज पे स्टिक ना करो, मिक्स एंड मैच करके भी लो। बच्चे को जौन सी चीज पसंद आ रही है ना, उसको आप मद्देनजर रखो। अच्छा, वी लेफ्ट विद जस्ट 1 मिनट, जल्दी से विल स्विच बैक, और ये हमारा इंशाल्लाह लास्ट पार्ट होगा। 5:30 तक इंशाल्लाह हम लोग वाइंड अप करेंगे, सो जस्ट कम बैक क्विकली। थैंक यू।